All right, guys, we are going to start. Good morning. Just to make sure that the screen is visible to you and you can hear me. Can you see the screen? Anyone? Can you see the screen? Yes, sir. Okay, great. Thank you. So I'm going to do a very quick recap of what we did last time. Recap of what we did last time. We talked about survey sampling and we talked about parameter estimation. Survey sampling, and parameter estimation. And in particular, we talked about the estimation of the parameters of the distribution, such as the mean, and we have a very short discussion on estimating the variance. Okay, so maybe you have a large population with certain mean mu and variance sigma square. Maybe mu is not known. Sigma square is also not known in most cases. In some cases, sigma square might be known, but we assume that mu is not known, and we are interested in finding the point estimates. The point estimates of mu and sigma square. Mu का estimate और sigma square का estimate. So हमने ये देखा था कि mu का जो estimate होगा, point estimate, that would be the expected value of the so sample mean है आपका. You can just use the sample mean, and the reason that you can use the sample mean as an estimate of mu is because the expected value of the sample mean itself turns out to be mu. And similarly, we had defined this parameter s square, which was sample variance, and we had shown that the expected value of the sample variance was equal to the population variance. So I can use the sample variance as an estimate of sigma square. So point estimate of mu was sample mean, and the point estimate of sigma square was sample variance. Now we also looked at we can, in addition to the point estimates, you can also talk about what we call the interval estimates. How confident you are that the value of mu, the estimate of mu that you are giving, हम म्यू की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकते जब तक कि पूरी पॉपुलेशन ना सैंपल कर लें, वो तो हम करते भी नहीं है. We sample a small portion of the entire population. From our small sample, we provide an estimate of mu. How good is your estimate? How confident you are about your estimate? That measure is provided by the interval estimates. So interval estimates के अंदर हमने confidence intervals पढ़े थे. We considered both the cases कि sigma square जो है वो अगर unknown हो तो t distribution से हम ये estimates interval के निकाल सकते हैं, और अगर sigma square known हो या estimate किया जा सकता हो, so then we can use the standard normal distribution to find the interval estimate, and we had the procedures outlined for both the cases. Okay. Sigma square के estimate के
इंटरवल एस्टिमेट के केस में हमने देखा था कि chi square डिस्ट्रीब्यूशन को यू कैन यूज दैट to estimate the interval of sigma square, कि how confident you are कि sigma square falls in a certain range. Okay. So point estimates, interval estimates, we have talked about both of those in the last 2 lectures. Today we are going to ask this following question. Today we are going to ask, कि forget about estimating the mean of the distribution or forget about estimating the variance of the distribution. I am interested in estimating the value of the random variable. Can we estimate the value of the random variable? Well, random variable की value estimate करने का क्या मतलब है कि ऐसा random variable, that random variable which is not accessible, हमें accessible नहीं है, ठीक है, उसको observe नहीं कर सकते. We cannot do a random experiment जो हम इस कोर्स में शुरू से करते आए हैं. We cannot perform an experiment and find an instance value of a random variable. We do know that if we repeat the experiment, we will get a different value of the random variable. But we can't get even single value of the random variable. Why? Because this is inaccessible. And we'll give you an example. The random variable which is not accessible, either it is not accessible or has not occurred yet. अभी वो अकर ही नहीं किया. एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो अभी अकर ही नहीं किया, and we'll give you example of that as well. This leads to two problems that we solve by using estimation. The first problem is a detection problem. And the detection problem is that you have some random variable x that you cannot observe. X is not accessible. But there is another random variable y which is somehow accessible or observable to us. And the example is कि from your cell phone, you send a signal, and that signal is received as the radio base station to which your cell phone is wirelessly connected. Okay. The signal that you send from your cell phone is received at the base station. Well, not exactly. There is some noise which gets added or multiplied to the signal that you are sending from your smartphone or cell phone. Okay. Similarly, if you are communicating from one end in an optical fiber cable, for example, so you are sending some optical signals from one end and you are receiving the optical signals at the other end. Well, not exactly. There is some some version of the signal that you send. Hopefully by looking at the received signal at the base station or at the receiver, hopefully by looking at the received signal, you can guess what the sent signal was. And the reason that we want to do that is कि भाई हमने एक जगह से सिग्नल दूसरी जगह भेजना है, एक जगह से एक फाइल दूसरी जगह ट्रांसफर करनी है, एक जगह से कुछ डेटा दूसरी जगह भेजना है. So when I send the data by encoding it into electrical pulses or optical pulses or some other way, so the signal which is received, by looking at the received signal, I want to guess, I want to make an estimate what the sent signal was. And if my estimate is correct, hopefully it is most of the time, if my estimate is correct, that means that whatever I wanted to send, I have received that. जो मैं भेजना चाहता था वही रिसीव हो गया, चाहे वो नॉइजी वर्जन है उसकी, चाहे डिस्टॉर्टेड वर्जन है उसकी, बट उस डिस्टॉर्टेड नॉइजी वर्जन में से मैंने अपनी ओरिजिनल वर्जन ढूंढ ली है. ओके, दैट मेक्स सेंस. सो एग्जांपल,
communication over a channel. चैनल क्या चीज है? वायरलेस चैनल हो सकता है या तार के ऊपर वो भी एक चैनल हो सकता है. इट्स द मीडियम ओवर विच यू कम्युनिकेट. Communication over a channel using electrical or optical pulses or signals. So that's an example. The other problem जो हमने यहाँ पे बताया था कि आज के टॉपिक में we are going to talk about estimating the value of the random variable, but kind of a random variable which is either not accessible. So this x is not accessible to us, but y is accessible to me. Observing y, can I tell something about x? Now you might be guessing here. Okay, if x and y, they are two random variables, if they are independent, then knowing y does not tell you anything about x. And that is actually true. If x and y are independent, then knowing y will not tell you anything about x. So when it is more beneficial that knowing y will tell you something about x, will tell you a good estimate of x, well, when x and y are highly correlated, इनके दरमियान अगर dependence ज्यादा होगी, correlation ज्यादा होगी, तो then these two guys will increase together or decrease together or move in the opposite. अगर negative correlation भी होती है आपके पास, -1 is a very good correlation. So knowing one variable, if the correlation ka magnitude is very high, if the correlation magnitude between x and y is very high, then knowing y will tell you lots of things about x, will give you lots of information about x. Does that make sense? Yeah. Okay. So the other problem that we are going to talk about is also about the estimation of the value of the random variable. What kind of a random variable? Which has not occurred yet, and this kind of a problem is called a prediction problem. Both of these are one and the same thing. दोनों में हम random variable की value estimate करेंगे, but this is called a prediction problem. A prediction problem is this: okay, you can observe past and present, okay, and estimate the future value. And the example of that would be, कोई example देना चाहेगा? Anyone? Can anyone give an example? Sir, weather forecasting. You predict the weather by knowing the weather of the past 5 years. और कोई example देना चाहेगा? Thank you. GDP. Sorry? GDP of a country. GDP? Yes sir, जो gross domestic product होता है country का. GDP of a country. GDP of a country. Thank you there. Anyone else? कोई और? कोई एग्जांपल दें कि पास्ट और प्रेजेंट वाली वैल्यूज आप ऑब्जर्व कर लें और फ्यूचर की वैल्यू आपने प्रेडिक्ट करनी है. रिटेल स्टोर्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ये. वेल, सेल्स सर्विस शूज की शॉप के अंदर आज कितनी सेल्स हुई हैं जूतों की, और पिछले 5 साल में कितनी सेल्स हुई हैं, पिछले 2 साल में कितनी सेल्स हुई हैं, पिछले 10 साल में कितनी सेल्स हुई हैं. Based on all of that data, which is basically the values of the random variable, I would like to predict how many sales I'm going to see in the next month. So next month के अंदर मैंने जितनी सेल्स देखनी है वो मैं शू स्टोर के अंदर जूते उस तरह के जाके उतने स्टॉक कर दूंगा. So if I can accurately predict with low error, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकेंगे, बल शायद बता भी सकें, बट इफ वी कैन टेल अ वैल्यू, इफ वी कैन एस्टिमेट अ फ्यूचर वैल्यू विद लो एरर, then I can do lots of interesting stuff.
You know, I can change the supply chain of my store and stock the items that I expect to be sold in the next week or next month or next day. So ये जो है weather prediction किसी ने बताया, weather prediction और GDP prediction, thank you guys, और sales prediction. So ये हम सब predict कर सकते हैं. So ये लगता है कि ये कोई और कोर्स शुरू हो गया, but we will connect it with the random variables. We will connect it with the topic that we studied in the last week. ये estimation वाला जो topic हमने पढ़ा है, ठीक है. So both of these problems, the detection problem and the prediction problem, दोनों के cases में इस तरह से कि there is a box and there is an input to that box, and that input is X and the output is Y. I can observe Y, observable Y. Y is observable and X is not accessible. X is not accessible. क्यों? क्योंकि वो बस हमें किसी वजह से हमें accessible इसलिए नहीं है कि वो दूर से वायरलेस बैठा को भेज रहा है, एक ट्रांसमीटर भेज रहा है, मुझ तक उसकी एक्सेस नहीं है. I can only receive the signal that the guy is sending. Okay? या सेल्स की मुझे करंट वैल्यूज पता है, वाई करंट वैल्यूज पता है और पास्ट वैल्यूज भी पता है. ऑल ऑफ दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन वाई, बट आई डोंट नो द फ्यूचर वैल्यू. सो नोइंग वाई, I would like to estimate X. So knowing why, we would like to estimate X. I hope कि estimation का purpose, problem की clarity आ गई है. How to solve it, we don't know yet, but we will. Any questions so far? कोई question हो इस बारे में? Okay, we'll move forward. So the first estimator that we are going to see is called the map estimator. The map estimator. The map estimator. Okay. And this is very logical. The map estimator is very logical. Before I tell you what a map estimator is, would anyone want to guess कि अगर y एक random variable हो जो मुझे पता हो और x एक ऐसा random variable है जो मुझे नहीं पता, but I do know कि both of these guys are related through this box. There is some relationship between x and y. ऐसा नहीं है कि x और y बिल्कुल completely independent हो. Independent होंगे तो y का आपको पता भी चल जाए तो x के बारे में कुछ नहीं बता सकते, कुछ estimate नहीं कर सकते. There is some connection between x and y. Some connection between x and y. We don't know that connection either. But I am interested in estimating the value of x, knowing the value of y. Would anyone want to suggest what might be a reasonable way of doing that? Y और x दो random variable हैं. एक random variable आपको दिया गया हो और दूसरा random variable आपने estimate करना है. There is probably some connection between these two random variables. कोई correlation है उनके बीच में. We already know what correlation means. और correlation पढ़ते हुए हमें ये पता भी चला था कि correlation अगर positive हो तो both random variables increase simultaneously or decrease simultaneously. So knowing the value of one random variable, if the random variable जो आपको पता है वो high values ले रहा है अपनी distribution में से, तो इसका मतलब है कि दूसरा random variable भी high value ले रहा होगा अपनी distribution में से. So anyone would like to suggest कोई method कि knowing y, knowing random variable y, how can you guess random variable x? उसकी वैल्यू को कैसे guess करेंगे? कोई suggestion तो देंगे, कोई thought process, कोई टाइप कर दें बेशक अगर बोलने में मुश्किल हो रही है. No one wants to contribute?
मैं पूछ लेता हूँ, गुलाम मोहिउद्दीन, डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट? कि अगर y पता हो, कैसे, कोई आइडिया दें कि कैसे हम x को गैस कर सकते हैं? सर कोई मैपिंग फंक्शन के थ्रू मैप कर दें, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसे करेंगे। सही है। Okay, so these are random variables. Maybe we know the distributions somehow. We know the distributions. किसी तरीके से हमें distributions का पता हो. So I will give you, the definition of map estimator. फिर आपको अंदाजा होगा कि ओ ये तो वाकई ये तो बड़ा आसान लग रहा है, ये तो बड़ा लॉजिकल लग रहा है, ठीक है. So given observation capital Y is equal to Y. जो आपका जो random variable capital Y है, it takes a fixed value small y. Small y is not a random variable by the way. वो एक value ले लेता है, ठीक है. What is the most probable x, most probable input x की क्या वैल्यू हो जो ऑब्जर्वेशन y को पॉसिबल बनाती है. So see, y is a random variable which can take many possible values. It takes one fixed value which is small y, और ये मैंने ऑब्जर्व कर ली, इसका मुझे पता चल गया, ये डब्बे की आउटपुट मुझे पता चल गई. सो थिंक अबाउट दिस कि आपके पास सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं, या +1 आप भेजते हैं या -1 भेजते हैं, ठीक है. और आपके पास जो रिसीव हो रहा है वो थोड़ा सा नॉइज ऐड हो जाता है, तो ना आपके पास +1 मिलता है ना आपको -1 मिलता है. लिटिल बिट ऑफ नॉइज गेट्स एडेड टू दैट, ठीक है. Knowing the value of y, what is the most probable input x? Okay, so if I tell you, and this is, by the way, is the map estimator, okay, find an x, okay, find capital X is equal to x that maximizes the probability that x is equal to x given y is equal to y. This makes logical sense. कि एक ऐसा x ढूंढते हैं जो इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर देता है, ठीक है. अब हमने y तो ऑब्जर्व किया है, तो इसका मतलब है कि दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल x that I should estimate. ये मेरा estimate ये होना चाहिए. This is the most probable x which will cause this y. ठीक है. Now आप ये भी कह सकते हैं कि why you are saying कि probability x is equal to x given y is equal to y. ऐसे भी तो हो सकता है कि एक ऐसा x ढूंढें जो probability y is equal to y given x is equal to x को मैक्सिमाइज कर दे. ऐसा x ढूंढना है आपने, यहां पे आपने ये ऐसा x ढूंढना है जो इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करे. मैं एक ऐसा x भी तो ढूंढ सकता हूं जो प्रोबेबिलिटी y is equal to y given x is equal to x को मैक्सिमाइज करे. देखें, y is equal to y जो है ये फिक्स्ड है, y is equal to y ये तो हमने फिक्स कर दिया है, ये तो हमने ऑब्जर्व कर लिया है, ठीक है. वेरिएबल जो है वो हमारे पास सिर्फ ये x ही है, वेरिएबल x ही है. फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, फॉर ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, आई विल फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी. जिसके लिए वो मैक्सिमम मैं कहूंगा यही x है, या आई फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी, और जिस x के लिए ये मैक्सिमम हो मैं कहूंगा कि यही वाला x है, ठीक है. y तो हमने ऑब्जर्व कर लिया, y अब फिक्स हो गया है. x is something which we don't know. हमने उसकी वैल्यू, वो वैल्यू ढूंढनी है जो इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर दे या इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर दे, ठीक है. सो जो ये पहले वाला है, जो इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करता है, that estimator is called a map estimator, maximum a posteriori probability estimator. तो मैप एस्टिमेटर इसको बोलेंगे. ये दूसरा वाला भी एक एस्टिमेटर है, ये एक डिफरेंट एस्टिमेटर है. इसको हम अभी स्टडी करते हैं,
ये जो दूसरा एस्टिमेटर है इसको मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर बोलते हैं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। we'll go to that from मैप एस्टिमेटर। तो मैप एस्टिमेटर क्या कर रहा है कि मैप एस्टिमेटर is maximizing this probability, okay? So that means कि you have to find max over x, the probability x is equal to x given y is equal to y। ये discrete के केस में, by the way, continuous के केस में जो है ये probability will get replaced by the PDF। Okay. So find an x which maximizes this. So argument of this function, the argument of this guy, that x which is the argument which maximizes this is our answer. Okay. Now let's try to use this relationship here. Probability x is equal to x given y is equal to y. We know that this is equal to, by using the Bayes rule, this is equal to y is equal to y given x is equal to x into probability x is equal to x divided by probability y is equal to y। तो ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है जिसको हमने मैक्सिमाइज करना था, उसको मैंने उस एक्सप्रेशन को ये मैंने खोल के ये राइट हैंड पे लिख दिया। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड यू माइट नोटिस कि ये प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y, ये तो कोई असर ही नहीं करेगा। Why? Because I am looking for an x। मैं तो एक ऐसे x की तलाश में हूं जो इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमम कर देगा, ठीक है। सो दैट x does not get impacted by this denominator। मैं x की हर वैल्यू के लिए ये चीज लेफ्ट हैंड साइड वाली कैलकुलेट करूंगा या ये राइट हैंड वाली चीज कैलकुलेट करूंगा। बट थिंक अबाउट इट, यू नो, पिक एनी वैल्यू ऑफ x, द प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y, वो तो एक कांस्टेंट है, वो तो इंपैक्ट ही नहीं करेगी। इसका मतलब है कि मैंने जो मैक्सिमाइज करना है वो न्यूमरेटर को मैक्सिमाइज करना है, ओके। सो नाउ वी रिक्वायर probability x is equal to x, sometimes known, sometimes unknown, sometimes known, sometimes not known, okay. We can assume uniform x, assume uniform x. So probability x takes a value x is always uniform. When it is uniform, it would be constant for every value of x. It would be constant. That means कि really what we are trying to do is maximize over x probability y is equal to y given x is equal to x। ये जो मैंने इस वाली टर्म जो लेफ्ट वाली को मैंने मैक्सिमाइज करना था उसको मैंने खोल के ये राइट हैंड साइड पे लिख दिया, जिसमें y वाली टर्म जो है वो किसी भी x के लिए सेम रहती है। एंड व्हेन x इज यूनिफॉर्म तो ये प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x ये भी सेम रहती है यूनिफॉर्म के लिए। एंड देन यू आर जस्ट लेफ्ट विद प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y गिवन x इज इक्वल टू x। इसको हमने मैक्सिमाइज करना है। एंड दिस एस्टिमेटर इज कॉल्ड ए MLE estimator। MLE estimator, ठीक है। So अगर x is uniform, then map estimator and MLE estimator, they are exactly the same। However, when x is not uniform, they may not be equal, they may not be the same। एक एस्टिमेटर से मुझे कुछ और जवाब मिलेगा, दूसरे एस्टिमेटर से कुछ और जवाब मिलेगा। We will have an example for both cases। Okay. So this applies to discrete random variables. For continuous random variables, instead of the probabilities, conditional probabilities, we have conditional PDFs। For continuous random variables, the map estimator is the one which maximizes over x,
f of x given y, x given y, जो इसको मैक्सिमाइज कर देगा, जो इसको मैक्सिमाइज कर देगा. वंस अगेन y is going to be fixed, जो हमने ऑब्जर्व किया है. y is going to be fixed, जो हमने ऑब्जर्व किया है, fixed observed, and x की एक ऐसी वैल्यू तलाश करेंगे जो इस पीडीएफ को मैक्सिमाइज करेगा. ठीक है. And similarly, the MLE estimate is the one which will maximize over x f of y given x, Again, इसमें y fixed होगा और हमने x की हर वैल्यू के ऊपर iterate कर देना है, and we need to find out के what x maximizes this function. That x is our answer. That is our estimate. That is our MLE estimate. So map MLE, both will be equal when x is uniform. Both will be equal when x is uniform. Example is an order. And the example is pretty simple. Let's say you have a joint density function of x and y. Again, इसमें से एक हमारे पास available होगा, दूसरा हमें estimate करना होगा. Is equal to k e to the minus x e to the minus y, e to the x e to y, and let's say the area of integration is 0 is less than y, x is greater than or equal to y, less than infinity. So ये कौन सा region है? ये region कौन सा बनता है? This is y and x both greater than 0. So this is going to be first quadrant. This is going to be first quadrant. First quadrant के अंदर भी x is greater than y. So you have this line which is x is equal to y. If you have x here and y here, and we are talking about this region. We are talking about this region going all the way to infinity. Going all the way to infinity. Okay. This is the region. This is the region where in this region x is greater than or equal to y. Is in this blue region. Okay. So now, so we are given this joint density function, and I am interested in the estimates of, map and MLE estimates of x given y is equal to y. Maximum a posteriori probability estimate and maximum likelihood estimate of x given y is equal to y. ये दोनों निकालने हैं. So इसके लिए हमें क्या चाहिए? दोनों निकाल सकते हैं. दोनों के लिए हमें क्या चीज चाहिए? We need these conditional distribution function, conditional PDFs. So let's find the conditional PDFs. Conditional PDF कैसे find करेंगे? We are given the joint PDF. Joint को marginal से divide करते हैं तो conditional आ जाता है. लेकिन marginal तो हमारे पास है ही नहीं, तो marginal निकालते हैं पहले. But marginal निकालने से पहले हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. We need to figure out what this k is. Okay. So k कैसे निकालेंगे? K निकालने के लिए first find k. K निकालने के लिए we'll integrate x from 0 to infinity and y from 0 to x, and x going from 0 to infinity. Y will go from 0 to x. Okay. K e to the x, e to the y minus both of those, e dy dx, this should be equal to 1. इसको integrate करें. Very easy integration. K is constant which will come out. E to the minus y की integration जो है minus e to the minus y होती है. So k will come out. You have 0 to infinity, x going from 0 to infinity. और अंदर y की जो integration है वो minus e to the, oops, ये कहाँ से आ गया? Minus e to the minus y going from 0 to x and dx. This should be equal to 1. Okay? So this would be equal to k, x is equal to 0 to infinity,
and this would be equal to 1 minus e to the minus x dx would be equal to 1. I think this is, yeah. So this would be equal to k maybe some mistake here. हाँ, एक e to the x ये भूल गए कहीं, ये एक e to the x along the way कहीं भूल गए, e to the minus x. So this would be equal to e to the minus x dx. So this would be equal to k, x is equal to 0 to infinity, e to the minus x minus e to the minus 2x. This should be equal to 1 dx. Okay. So this would be equal to k, और e to the minus x ये इसके इंटेग्रल 0 टू इंफिनिटी क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल है आपके पास, इसको इसका इंटीग्रल लैम्डा इज इक्वल टू 1 के साथ एक एक्सपोनेंशियल है, जिसको आप इंटीग्रेट करें 0 से इंफिनिटी तक. सो दिस शुड रियली गिव यू 1 माइनस अगर ये यहाँ पर एक इसके साथ एक 2 लगा होता, अगर यहाँ पे एक 2 लगा होता तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल बन जाता, तो लगा देते हैं 2 और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है. सो माइनस 1/2 उसका भी इंटीग्रल 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1. सो 1/2k should be equal to 1, which means k is equal to 2. k आपके पास 2 आ गया, ठीक है. सो सबसे पहले हमने k फाइंड कर दिया, ठीक है. नाउ वी नो द एग्जैक्ट जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन. सो fxy दोबारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, fxy would be equal to 2 e to the minus x e to the minus y 0 is less than equal to y less than equal to x less than equal to infinity. Okay. Well, maybe not equal to infinity, but yeah, you get the point. Now we know the joint distribution. So let's find the marginal of x. Marginal of x. Marginal of x. fxx. How do I find that? Well, in order to find that, you just need to integrate. You just need to integrate from 0 to x. Why going from 0 to x? Y cannot be greater than x. Why need to go to 0 to x? 2 e to the minus x e to the minus y dy. Okay. And this will turn out to be 2 e to the minus x 1 minus e to the minus x completed. Not really. We have to specify the limits. 0 less than x less than infinity. What about the marginal of y? Fy of y. Marginal of y, or the PDF of y, do not make a mistake of assuming that there is a symmetry here. Although के joint distribution लगता है कि symmetric है, but it is not symmetric. Why? Because ये limits जो हैं ये इनके अंदर symmetry नहीं है. Y is always smaller than x. So y की distribution वो नहीं होगी जो x की distribution होगी. Y की distribution वो नहीं होगी जो x की distribution होगी. And in fact, you can find the distribution of y, x going from y to infinity 2 e to the minus x e to the minus y dx. And this will turn out to be 2 e to the minus 2y. ये आसानी से ये इंटीग्रेशन हो जाती है if we recall the CDF and complementary CDF of the exponential distribution. अगर वो हमारे ज़हन में हो तो ये बहुत easy हो जाएगी. And for completion's sake, we have to write the limits here. Y is less than infinity.
सो हमारे पास अब मार्जिनल्स आ गए। मार्जिनल हमने क्यों निकाले थे बाय द वे? मार्जिनल्स हमने इसलिए निकाले थे कि जॉइंट को मार्जिनल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कंडीशनल आएंगे। और कंडीशनल क्यों चाहिए थे? कंडीशनल इसलिए चाहिए थे क्योंकि मैप एस्टिमेटर और MLE एस्टिमेटर they depend upon the conditional distributions. Okay? So let's find the conditionals. Let's find conditionals PDFs. So सबसे पहले f of x given y would be equal to the joint fxy xy divided by fyy, and this will be equal to 2 e to the minus x e to the minus y divided by 2 e to the minus 2y. तो इसको लिख सकते हैं, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, e to the minus x and e to the y, और ऐसे भी लिख सकते हैं e to the minus x minus y, and not completed until we tell कि y is less than equal to x, and of course y is greater than 0. Okay. Similarly, f of y given x, वो कैसे निकलेगी? f of y given x would be equal to again ये joint को x के marginal से divide कर दें, and you will find out that this is equal to e to the minus y over 1 minus e to the minus x. Once again, 0 is less than y less than equal to x. And of course, x less than infinity भी उसके साथ ही है. इसमें भी x less than infinity. Okay. Now we know the conditional distributions. Now the estimators. Let's find the estimators. So first of all, map estimator. Map estimator is what x maximizes f of x given by x given by. Take a look at x given by. कौन सा ऐसा x है जो इसको मैक्सिमाइज करता है? कौन सा ऐसा x है जो इसको मैक्सिमाइज कर देता है? Keep these limits in mind. Keep these limits in mind. What x will maximize fxy? Answers in the chat window, please. कौन सा ऐसा x है कि ये फंक्शन max over x e to the minus x minus y या e to the minus x into e to the y इसको मैक्सिमाइज कर देगा? I need the argument of that. I need an x which maximizes e to the minus x minus y. इसको कौन मैक्सिमाइज करेगा? देखें, हमें x की भी रेंज पता है, हमें y की भी रेंज पता है, ठीक है? हमें ये भी पता है कि ये e to the minus x minus y है, e की पावर नेगेटिव में है, ये जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा, x is always greater than y by the way, जैसे जैसे x y से बड़ा होता जाएगा, the difference between x and y ज्यादा होता जाएगा, वैसे वैसे e की पावर माइनस कोई नंबर बड़ा होता जाएगा और वो वैल्यू जो है वो छोटी होती जाएगी, which means कि the best we can do is कि x को y के इक्वल रख दें, अगर मैं x को y के इक्वल कर दूं तो ये e minus 0 वो 1 आ जाएगा आपके पास. You cannot do better than that, can you? Because x cannot be smaller than y. X cannot be smaller than y. If x could be smaller than y, तो ये e की पावर पॉजिटिव में आ सकती थी, तो मैं जीत सकता था. But x has a limitation. It has to be greater than or equal to y. And the best we can do here is कि x is equal to y आप ले लें और x is equal to y लेंगे. So this will tell you
कि योर आंसर इज कि एक्स मैप, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड, मैक्सिमम ए पोस्टीरियोरिटी प्रोबेबिलिटी एस्टिमेटर, जिसको एक्स हैट अक्सर लिखते हैं, एक्स हैट इज इक्वल टू वाई. दिस इज द एस्टिमेट ऑफ एक्स गिवन वाई. This is the estimate of x given y. So आपने क्या किया है, आपने y को तो ऑब्जर्व किया है, y को आपने ऑब्जर्व किया है, एंड व्हाट इज योर एस्टिमेट, जो भी y आपने ऑब्जर्व किया आपने कहा यही आपका एस्टिमेट है, यही हमारा एस्टिमेट है, नो फंक्शन ऑफ दैट. इसी तरह MLE मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट, वो क्या होगा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट होगा arg maximize over x e to the minus y over 1 minus e minus x. इस केस के अंदर भी जस्टिफाई कीजिएगा कि what value of x will give you, what value of x will give you the maximum value of this function. So in this case also, if you increase x beyond y, you cannot increase x below y. Y से नीचे नहीं हो सकता. When you keep on increasing x, जैसे जैसे x को बड़ा करते जाएंगे, ये e की पावर जो है माइनस ये छोटी होती जाएगी. सो डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता जाएगा और आंसर जो है वो छोटा होता जाएगा. पूरी का आंसर जो है वो छोटा होता जाएगा. Which means के pick the minimum value of x, which means this also tells me कि मैं MLE जो है वो भी y के बराबर ही, y से छोटा तो हो नहीं सकता, ये भी y के बराबर है, ये भी y के बराबर है. It is a coincidence कि both of these turn out to be the same, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सेम हो. हमें पता है कि अगर x यूनिफॉर्म होता तो ये दोनों सेम होते. यहां पे x यूनिफॉर्म नहीं है फिर भी सेम आए हैं, which is a coincidence. Okay, we'll give you some more examples, but before we do that, I'm going to talk about a case which occurs quite naturally in many situations, and that case is jointly Gaussian random variables. इनको bivariate normal या bivariate Gaussian random variables भी कहते हैं. Bivariate. We have already seen a single normal random variable. If x is normal with mean mu, variance sigma square, then the distribution of x, the PDF of x, is 1 over square root of 2 pi sigma e to the minus x minus mu whole square over 2 sigma square, and x going from minus infinity to plus infinity. यही होता है, right? ये x की डिस्ट्रीब्यूशन है with mean mu, variance sigma square. स्टैंडर्ड नॉर्मल में mu को 0 कर देंगे, वेरिएंस को 1 कर देंगे, राइट? सिमिलरली y का भी हम लिख सकते हैं. सो लेट्स से कि मैं x का जो मीन है वो चूंकि x और y दोनों आ रहे हैं, तो x के मीन को मैं mu x कह देता हूं, इसकी वेरिएंस को मैं सिग्मा x कह देता हूं. ठीक है, सो ये सिग्मा x हो जाएगा, ये mu x हो जाएगा, ये सिग्मा सबस्क्रिप्ट में x चला जाएगा. ठीक है. Similarly, if y is normal mu y and variance sigma y square, which are constants, mean and variance, then fy of y would be equal to 1 over square root 2 pi sigma y e to the minus y minus mu y whole square over 2 sigma y square. Again, minus infinity, y less than plus infinity. Okay. So these are two random variables. We don't know whether they are correlated, they are independent. We don't know anything about their mutual relationship. Okay. Now, these two random variables, if they are independent, if x, y independent, अगर ये uncorrelated होंगे तो इंडिपेंडेंट भी लाजमी होंगे, बिकॉज दे आर नॉर्मल. ये हमने पहले पढ़ा कि नॉर्मल के केस में अनकोरिलेटेड का मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं. इट्स नॉट जनरली ट्रू, बट फॉर नॉर्मल इट इज ट्रू.
अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ऑलवेज अनकोरिलेटेड, बट कोरिलेटेड डज नॉट इंप्लाई इंडिपेंडेंस, बट नॉर्मल के केस में इट डज apply independence. Okay, it does imply independence. So if x and y are independent and also means that they are uncorrelated, okay, then we can write fxy equal to the product of this guy and this guy, simply fxx into fy of y, right? क्योंकि ये independent है, हम ये लिख सकते हैं इसको. But in general, if we don't know, in general, if we don't know whether they are dependent or independent, if the PDF, joint PDF, I should say joint PDF, if the joint PDF of x and y takes the following form, और ये जरूरी नहीं है कि ये वाली फॉर्म लेगा. In general, if the joint PDF of, in general का मतलब है कि not independent, not independent necessarily, ठीक है, not necessarily independent. और अगर उनका joint PDF ये वाली फॉर्म ले सकता है, अगर उनका joint PDF ये फॉर्म लेगा जो हम यहां लिखने लगे, this is fxy x, y is equal to, ये एक complicated सी है फॉर्म, but it's pretty simple. देखने में पहली नजर में complicated लगेगी, लेकिन अगर उस पर गौर करेंगे तो easy लगेगी. So e to the minus 1 over 2 1 minus rho square, and rho is the correlation between x and y. Correlation between, could be zero, क्योंकि ये मैंने कहा कि not necessarily independent, मतलब हो भी सकते हैं ये, but not necessarily. So x minus mu x whole square over sigma x square plus y minus mu y whole square over sigma y square minus 2 rho x minus mu x y minus mu y over sigma x sigma y divided by एक एक्सपोनेंशियल होता है तो उसके साथ ये कोई चीज से डिवाइड भी हो रहा होता है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई होल स्क्वायर सिग्मा x सिग्मा y स्क्वायर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर. अगर ये फॉर्म लेता है, if the joint PDF takes this form, then then x and y are jointly Gaussian. ये जरूरी नहीं है कि ये वाली फॉर्म लेगा, ऐसा हो सकता है कि x गॉसियन हो, y भी गॉसियन हो, लेकिन उनका जॉइंट पीडीएफ ये फॉर्म ना ले. दिस इज एंटायरली पॉसिबल. अगर ये फॉर्म नहीं लेगा तो वो जॉइंटली गॉसियन नहीं होंगे. दे कैन बी इंडिपेंडेंटली गॉसियन बट नॉट नेसेसरली जॉइंटली गॉसियन. So I'm going to make a few statements here. सारे वो प्रूव नहीं करेंगे हम. If x and y are jointly Gaussian, यानी इस तरह की उसकी शक्ल बनती है इनके joint PDF की. If they are jointly Gaussian, then x and y are individually Gaussian as well. Vice versa is not true. Vice versa is not necessarily true. यानी वो ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअली गॉसियन हो लेकिन जॉइंट उनका गॉसियन ना हो, अगर ये वाली शेप नहीं आएगी उसके पीडीएफ की, जॉइंट पीडीएफ की. So I'm going to make another statement here कि
when x and y are jointly Gaussian, then the conditional densities fx given y, x given y, and f of y given x, y given x, conditional PDFs are also Gaussian. Are also Gaussian. और वो गॉसियन फंक्शन क्या है वो भी हम लिख सकते हैं, f of x given y, x given y. कैसे लिखेंगे? जॉइंट डिवाइडेड बाय द मार्जिनल. ये हमें पता है कि दिस हैज टू बी f of xy डिवाइडेड बाय fy of y. ये कहां से आएगा? जॉइंट कहां से आएगा? जॉइंट की तो ये एक्सप्रेशन हमने ऊपर लिख दी है, जॉइंट की एक्सप्रेशन हमने ऊपर लिख दी है. और मार्जिनल y का कहां से आएगा? मार्जिनल आएगा आपके पास, ये मार्जिनल की भी एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर लिख दी है. दिस इज मार्जिनल, दिस इज बिलो जॉइंट. इन दोनों का आपस में रेशो लेंगे, और इसका रेशो लेंगे तो ये होगा e to the power exponential -1/2 1 minus rho square sigma x square, और अंदर ब्रैकेट में x minus mu x minus rho sigma x over sigma y, y minus mu y whole square. और ये पूरी एक्सपोनेंशियल की पावर है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई. ये बाय द वे ये इजीली प्रूव कर सकते हैं हम, ये इजीली प्रूव कर सकते हैं. कैसे प्रूव कर सकते हैं? कि अगर मुझे जॉइंट की ये डिस्ट्रीब्यूशन पता है और ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पता है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन पता है, दोनों का रेशो लेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा हमें. स्क्वायर कंप्लीट करेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. स्क्वायर कंप्लीट करें हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. We will get this answer. What that means is अभी ऊपर हमने क्लेम किया था कि when x and y are jointly Gaussian, then fx given y and f of y given x, they are also Gaussian. So देखते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनती है. f of x given y, तो x given y is really a normal distribution. हमें उसने बताया कि वो Gaussian होगी, Gaussian या नॉर्मल होगी, is a normal distribution. बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मुझे इसका मीन और वेरिएंस पता होना चाहिए अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस एक्सप्रेशन पे जरा गौर करें और बताएं कि इफ दिस इज ए सिंगल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, व्हाट इज द मीन एंड व्हाट इज द वेरिएंस. यहाँ पे मीन और वेरिएंस क्या है आपके पास? मीन क्या है और वेरिएंस क्या है? सो थिंक अबाउट इट. इसके साथ कंपैरिजन करते हैं, किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं. एफ W of W, अगर W एक गॉसियन है, 1 over square root 2 pi W e to the minus W minus mu W whole square over 2 sigma W square. यहाँ पे ये sigma W आएगा. ठीक है, इसके साथ कंपैरिजन करें जरा. ये मैंने एक आपको गॉसियन की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिख दी है, इसके साथ अगर ऊपर कंपैरिजन करें, सो दिस लुक्स लाइक नॉर्मल. ये और ये दोनों एक जैसी लग रही है. ठीक है, ये स्क्वायर रूट 2 पाई भी आ रहा है, और नीचे जो ये सिग्मा डब्ल्यू जो आपके पास आ रही है, सो ये आपके पास ये वेरिएंस आ रही है, सिग्मा वाई इंटू 1 माइनस सिग्मा एक्स होना चाहिए यहाँ पर, should be sigma x. Okay, so इससे अगर कंपैरिजन करें तो आपके पास जो है ना इसकी वेरिएंस निकल आती है. वेरिएंस आ गई सिग्मा एक्स स्क्वायर 1 minus rho square. That's the variance. And what is the mean of this guy? The mean
is वो ऊपर एक्सपोनेंशियल के अंदर w माइनस म्यू w होता है, w में से मीन माइनस हो रहा होता है। तो ये देखें x में से क्या चीज माइनस हो रही है, x में से जो चीज माइनस हो रही है वो हम वहां पर लिख देते हैं, x में से जो चीज माइनस हो रही है वो वहां पर लिख देते हैं, दैट इज म्यू x प्लस रो टाइम्स सिग्मा x ओवर सिग्मा y माइनस म्यू y। स्मॉल y होना चाहिए। This is a Gaussian distribution with mean this and variance this, mean this and variance this. It is very important to note कि ये इसका mean क्या है और इसकी variance क्या है। क्यों? ये अभी हमारे पास आगे काम आने वाला है, ये आगे काम आने वाला है हमारे पास। So if x and y are jointly Gaussian है और उनकी आपस में correlation 0 है, अगर उनकी कोरिलेशन 0 हो तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब है उनके पीडीएफ्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो जस्ट पुट्स रो इज इक्वल टू 0 हियर। इसको रो को आप 0 पुट कर दें, यहाँ पर रो को 0 पुट कर दें, रो को 0 पुट करें तो ये वाली टर्म चली जाएगी, ये वाली टर्म जो है ये 1 हो जाएगी। सो यू विल सी कि इट वुड जस्ट सिंपली बी द प्रोडक्ट ऑफ fyy एंड fxx, fyy एंड fxx। अगर रो को 0 कर दें तो ये ऊपर वाली ये जो 2 हैं इसका और इसका, इनका प्रोडक्ट जो है ये आपके पास नीचे आ जाएगा। अगर रो को 0 कर दें, रो को 0 कर दें तो उन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है। सो अगर रो को 0 कर देंगे तो व्हाट वुड बी द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y? वेल लॉजिक टेल्स अस कि इफ दे आर इंडिपेंडेंट तो y जो है वो x की सेहत पे असर ही नहीं डालेगा। तो x की डिस्ट्रीब्यूशन वही होगी जो x की एक इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। सो conditional distribution would be the same as the marginal distribution if rho is 0, and that actually is the case. Put rho is equal to 0 here. Put rho is equal to 0 here. F of x given y would be normal. रो को 0 किया तो इसका मीन म्यू x हो जाएगा और इसकी वेरिएंस कितनी हो जाएगी? सिग्मा x स्क्वायर, which is what we expected. क्योंकि अगर रो 0 है इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है। If they are independent, then the conditional distribution of x would be the same as the marginal distribution of x. This is marginal distribution of x. Marginal distribution of x. So now I'm going to talk about the case when x and y are bivariate normal or jointly Gaussian, एक ही बात है, और jointly Gaussian या bivariate Gaussian या jointly normal, एक ही बात है। Okay? So the question is what is the map estimator of x given y is equal to 1? What is the map estimator? इसको सवाल का जवाब हम बड़े आसानी से दे सकते हैं। The answer is in another question कि what x maximizes f of x given y, ये कौन सा x है जो इसको मैक्सिमाइज करता है? Now look at the expression for f of x given y. This is the expression that we are talking about. Or this is the expression that we are talking about. ये ऊपर एक्सप्रेशन है, नीचे उसका पीडीएफ ही लिखा हुआ है। ठीक है। Now if y is given, which means कि small y is fixed, what x will maximize the value of f of x given y? So देखें f of x given y एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है
एफ ऑफ एक्स गिवन वाई एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका ये मीन है और ये इसकी वेरिएंस है, ये मीन है और ये इसकी वेरिएंस है. सो नाउ माय क्वेश्चन इज द फॉलोइंग कि इफ this is the PDF, this is the conditional PDF of x given y is equal to y. Okay, so f x given y, x given y. क्यों ये नॉर्मल है? क्योंकि अभी हमने कहा तो है, अभी तो हमने कहा है कि if they are jointly Gaussian then their conditional distributions are also Gaussian. So that means कि ये Gaussian होगा, इसका मतलब ये है कि इसकी शेप इस तरह की होगी. It would be symmetric, it would have a center value, और जो center value होगी वो क्या होगी? वो होगा मीन आपका. Okay, and when is this guy maximum? When is this guy maximum? This guy is maximum when your x, by the way, this is the distribution of x given by, but still the distribution of x. We know it is given by, but still it is the distribution of x. तो जो भी इसका मीन आता है, इस कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी मीन आता है, हमने x की वो वैल्यू रख देनी है ताकि जो है ये मैक्सिमाइज हो जाए. और वही तो मैप एस्टिमेटर है, वही तो मैप एस्टिमेटर है. मैप एस्टिमेटर यही तो करता है कि f of x given y को मैक्सिमाइज कर देता है ओवर ऑल x. ओके, सो मैप एस्टिमेटर, योर मैप एस्टिमेटर x hat map would be equal to the mean value here, and the mean value here is nothing but this guy here, mu x plus rho sigma x over sigma y, y minus mu y. This is your map estimator. This is your map estimator. So what is your MLE estimator? MLE estimator. Now the question is, what x maximizes f of y given x, y given x. But we don't know f of y given x. यहाँ पे हम symmetry लगा सकते हैं. Why? Because there is symmetry here. Okay? By symmetry, f of y given x has a normal distribution, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इसकी normal distribution थी, जिसका ये मीन था और ये वेरिएंस थी, बिल्कुल उसी तरह से इसका मीन होगा f of y given x का जो मीन होगा वो होगा mu of y plus rho times sigma y over sigma x, x minus mu x. Okay, so this would be mu y plus rho times sigma y over sigma x, x minus mu x, ठीक है. और इसकी जो वेरिएंस होगी वो होगी सिग्मा y स्क्वायर 1 माइनस रो स्क्वायर. एंड ऑफ कोर्स अगर रो को 0 कर देंगे तो मीन म्यू y हो जाएगा और वेरिएंस सिग्मा y स्क्वायर हो जाएगी अगर रो को 0 कर देंगे, कोरिलेशन को अगर 0 कर देंगे. नाउ द क्वेश्चन इज what x maximizes this? What x maximizes this? वो वाला x मुझे चाहिए और वो x जो है वो हमारा XMLE है. ठीक है, हमने अब ऐसा x तलाश करना है. अगेन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, this is normal distribution with some mean, okay, and some variation here. Okay. Now the question is कि the MLE estimate of x given y, how do I obtain that? कैसे करेंगे जो इसको मैक्सिमाइज कर दे. और इसको मैक्सिमाइज करने के लिए इसका मतलब है कि ये वाली जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसकी एक काउंटर एक्सप्रेशन होगी जहां पे y माइनस म्यू y ये सब कुछ आ रहा होगा.
सो दैट मीन्स कि हमें उसका मीन निकालना है, हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी है कि जहां पे y would be equal to, जहां पे y would be equal to rho times, y would be equal to mu y plus rho times sigma y over sigma x hat mle minus mu x इसके बराबर। ये ऐसे x की वैल्यू है जहां पे ये डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज हो जाती है, एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज मैक्सिमम व्हेन y टेक्स द मीन वैल्यू, व्हेन दिस y टेक्स द मीन वैल्यू। ओके, इसको सॉल्व करेंगे x hat mle के लिए। x hat mle would be equal to sigma x over, oops, ये would be equal to mu x plus sigma x over rho times sigma y minus mu y। ये हमारा MLE estimate है। Now notice that this is different। ये आपके पास number 1 this is map estimate है, and this is MLE estimate number 2 is MLE estimate। You will notice the difference here। ये दोनों सेम नहीं है, मिलते जुलते हैं बट सेम नहीं है। एक में ये रो ऊपर आ रहा है और एक में रो नीचे आ रहा है। सो स्पेशल केस अगर आप देख लें, स्पेशल केस x and y are standard normal, x and y are standard normal but jointly Gaussian, कुछ correlation है दोनों के बीच में। so map x hat map जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, x hat map जो होगा आपके पास would be equal to mu x which is 0 plus rho times sigma x over sigma y, they are 1 1, so this would be equal to rho times y, and x hat mle would be equal to 1 over rho times y, 1 over rho times y। so, amazing, yeah, ये difference आ गया दोनों के बीच में। So now I'm going to talk about errors of estimates, errors of estimates। so whenever you make an estimate, it will not be an accurate value, it would just be an estimate, just like that। so we are interested in the errors of estimates। so you again have this box, output is y, input is x, observe y, estimate x, x minus x hat, estimate x, and this estimate is called x hat। ठीक है, जो x hat map भी हो सकता है, x hat MLE भी हो सकता है। so x minus x hat is called the error of estimate, it's called the error of estimate। so normally we are interested in, normally we compute the mean square error, which is mean square error is equal to mean of error ka square, expected value of x minus x hat square। okay. so therefore for MLE and for map, both of these guys, mean square error क्या होगी, मीन स्क्वायर एरर मैप के केस में, मीन स्क्वायर एरर मैप के केस में क्या होगी, मैप के केस में होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस x हैट मैप, जो भी आपके पास एस्टिमेट आएगा उसका स्क्वायर लिया x में से माइनस करने के बाद एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, और इसमें मीन स्क्वायर एरर ऑफ MLE would be equal to the expected value of x minus x hat MLE whole square, this guy। okay, now
We already talked about these two estimates, map estimate और MLE estimate. Map estimate क्या करते हैं? F of x given y को maximize करते हैं. MLE क्या करते हैं? F of y given x को maximize करते हैं. There are other kinds of estimates that minimize the mean square error. उनको कहते हैं minimum mean square error estimates. MMSE estimates. Yeah. We'll consider multiple cases in here. So पहला case जो है, case one is कि no observation available. बस आपने तुक्का ही लगाना है. No observation available. Okay, you have this input x going into this box and y coming out of it. You don't have y available. There is no y available to you. So the best you can do is estimate x by a constant. को एक constant number ही बताना है आपने कि यार ये this is the estimate of x. What could that be? ये क्या हो सकता है वो constant number? Okay, so estimate x by a constant which minimizes the mean square error. ठीक है? And the mean square error is यहाँ पे x hat आपके पास आ गया some a. A is a constant. वो कौन सा constant है जो आपके mean square error को minimize करता है? x minus x hat whole square को minimize करता है. So x hat की जगह पे x minus a. अब observation ही नहीं है आपके पास तो आप कोई constant ही देंगे. ठीक है, इसको minimize करना. So minimize this with respect to a. कौन सा a इसको करेगा? Differentiate करें with respect to a, 0 के equal put करें, you will find out कि a will turn out to be equal to ex, expected value of x. So expected value of x is your best estimate. अगर आपको रैंडम वेरिएबल एक हो, आपसे कहा जाए कि उसकी वैल्यू मुझे बताएं एस्टिमेट करके, आपके हमने एक रैंडम वेरिएबल है उसको जनरेट किया, हर दफा जनरेट करेंगे डिफरेंट वैल्यू आएगी. एवरी टाइम यू आस्क फॉर एन एस्टिमेट, आपने एक एस्टिमेट आंसर देना है, एस्टिमेटेड आंसर देना है कि भाई रैंडम वेरिएबल एक दफा एक्सपेरिमेंट किया, जनरेट किया, क्या वैल्यू आई होगी बताएं. द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू इज आई कैन टेल यू कि जस्ट take the expected value of x. That is my best guess without knowing anything else. Okay. What is the error of this estimate? Error of this estimate is mean square error कितनी होगी? Expected value of x minus e of x whole square. क्योंकि आपका estimate जो है वो e of x है. ठीक है, which is, we realize, is nothing but the variance of x. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम कंप्लीट तुक्का लगाएं, किसी रैंडम वेरिएबल की एस्टिमेशन के लिए, we don't know any observation, we don't have any information, and we are just told to estimate the value of a random variable x. We will just say, okay, just take the expected value of x. That's the best estimate. That's the best I can do. What would be the error of that estimate? The error of that mean square error of that estimate would be equal to the variance. The mean square error of that estimate would be equal to the variance. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि if you had a little bit more information, then the worst you can do is एक ऐसा एस्टिमेट ढूंढें जो मीन स्क्वायर एरर, मिनिमम मीन स्क्वायर एरर एस्टिमेट, उसकी एरर जो आपके पास आई है, मीन स्क्वायर एरर आई है, वो वेरिएंस ऑफ एक्स आई है. इससे बुरा आप नहीं कर सकते. अगर आप बगैर किसी इंफॉर्मेशन के तुक्का लगा रहे हैं तो मीन स्क्वायर एरर आपके पास वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाती है. अगर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद है तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन आएगी, जो एस्टिमेट की एरर आएगी, मीन स्क्वायर एरर जो आएगी, would be less than the variance of x. Next time we will show what that is.
So we will close the session today. If there are any questions, we'll be happy to answer now before we close the session. कोई question है? No question? All right. Okay. So I will then stop the sharing and close the session. Thank you.